उसके जाने का जो रेट है वो 5% से भी कम कर देना, ठीक है। इसका मतलब है जब ड्रॉप आउट रेट 5% से कम हो जाएगा तो वी विल हैव अराउंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। एम आई क्लियर? डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यू आर विद मी, थैंक यू। मुझे लगा मैं बहुत सारी चीजें एक साथ बोल रही तो शायद तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। Okay, so the next aim that they had was to reduce overall primary dropout rates of all the students to less than 10%. Okay, पहला जो 5% था वो उन लोगों ने जो लोअर सोशल ग्रुप्स एंड लोअर जो जेंडर मतलब जो फीमेल्स है उनका ड्रॉप आउट रेट शुड बी बिलो 5% एंड द ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट शुड बी बिलो 10%, ऐसा उन्होंने एम रखा था। The third aim was to raise the average achievement level. Okay, achievement level कौन सी चीज, तीन चीजों में 3 hours, not 3 hours, arithmetic means math, science and English, इन तीन सब्जेक्ट्स में जो अचीवमेंट रेट है यानी उनका जो मार्क्स आता है that should be very good मतलब 60% नहीं, it should be a minimum level, that is it should be around 40% or 33%. Okay, then the next program which was initiated was मिड डे मील प्रोग्राम। ओके, ये तो आपने सुना ही होगा मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। अब ये जो डीपीईपी प्रोग्राम था वो 19 स्टेट्स में हुआ था, फिर मिड डे मील प्रोग्राम हुआ। अब मिड डे मील प्रोग्राम क्यों शुरू हुआ? हमको ऐसा लगा कि हम अगर बहुत सारे बच्चे स्कूल में इसीलिए भी नहीं आते क्योंकि उनके पास घर में खाने को अनाज ही नहीं है, तो इसीलिए वो लोग बाहर अर्निंग करने जाते हैं। तो अगर हम स्कूल में ही उनको खाना देने लगेंगे तो हो सकता है कि वो लोग खाना खाने के बहाने तो अपना एडमिशन कराए और स्कूल में हर साल आए, ठीक है। इसीलिए वी स्टार्टेड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिड डे मील। ओके, दैट वाज इन 1995. So 1993 was DPEP, 1995 was midday meal program which started. Okay, now under the midday meal program the central government used to provide food grains for free to the different agencies which will provide the food grains to the schools, to the elementary schools, and along with that the government also paid certain labor charges क्योंकि फूड ग्रेन्स पहुंचाने के बाद वो फूड ग्रेन्स को बनाना भी तो पड़ेगा, so they had a cook and all and they had to be given this construction of kitchen was done under the midday meal program. midday meal program को हम बोलते हैं MDM. Okay, MDM is midday meal program. So they said that certain amount of food grains were given free by the central government to the panchayats and nagar palikas, and then they used to give it to the respective schools in their nagar palikas and under their panchayat, and there was a kitchen which was given for every school, and they also had certain labor charges so that the cooks who cooked some the food were also being paid. Okay, the next program under UEE was or UEE matlab universalization of elementary education was Shiksha Karmi project. Okay, now the Shiksha Karmi project was a project under which there were certain teachers who dropped out from the elementary schools. देखो, ड्रॉप आउट सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं होता है, टीचर्स का भी होता है। जैसे किसी टीचर को बहुत सरकारी जॉब है, किसी दूर प्लेस में मिल गया जॉब, वहां पे वो रह नहीं पा रहे हैं तो वो लोग वहां से भी छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है। तो अंडर द शिक्षा कर्मी प्रोग्राम व्हाट वी डिड वाज दैट we had this project from 1987 to 1998. Okay, so under this program what we did is that the local teachers, जो locally qualified teachers हैं और जिसके पास minimum qualification है, जो 8 तक पढ़ा सकता है, ठीक है, उनके पास शायद बीएड ना हो, उनके पास शायद पीटीसी ना हो, लेकिन वो लोग 12th तक पढ़े हैं, वो लोग ने ग्रेजुएशन किया है एंड दे हैव द एटीट्यूड टू टीच। तो ऐसे टीचर्स को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया जो टीचर्स ने ड्रॉप आउट कर दिया यानी नौकरी छोड़कर चले गए क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही थी उनको। तो शिक्षा कर्मी वर दोस टीचर्स हु वर लोकल टीचर्स एंड हु वर replaced in place of teachers who wanted to drop out or who wanted to go away. Okay, so
अंडर दिस प्रोग्राम देयर वाज लॉट ऑफ रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. ये जो एनजीओज होते हैं उन लोगों का भी बहुत रोल था. जो एनजीओज में भी ऐसे एक्टिव वर्कर्स थे जो पढ़ा सकते थे, उनको भी पंचायत, यूजुअली ये गांव वाले स्कूलों में हुआ गया, ठीक है, बिकॉज गांव में ऐसी परिस्थिति आती है कि टीचर्स जो आते हैं अर्बन एरिया से, वो लोग शायद वहां सस्टेन नहीं कर सकते और छोड़ के चले जाते. तो उन लोगों को रिप्लेस करने के लिए वी अपॉइंटेड शिक्षा कर्मीज with a minimum qualification of class 8 for men and for class 5 for women. To overcome the basic lack of qualification, special training was given to these teachers. जिस मेल ने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है और जिस फीमेल ने 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, उनको हम लोग शिक्षा कर्मी के तौर पे स्कूल में रख लेते थे, और ताकि हमारे पास जो टीचर्स की कमी है वो ना दिखे, और फिर उन टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग दे देते थे सेपरेटली, सो दैट द टीचर्स आर ट्रेन्ड इनफ टू टीच द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. ओके, यस. Okay. The next program under UEE, as I have already told you, is Operation Blackboard. Okay. Operation Blackboard was also in 1987. This Shiksha Karmi program started in Rajasthan and it continued there only. Okay. And this operation और बहुत ज़्यादा extend नहीं हुआ वो. It continued, and now since we have lot of teachers who are qualified, we don't require Shiksha Karmis. Still in some rural areas we have Shiksha Karmis, okay? That is very rare, but now we have enough teachers who are trained, okay? The next program was Operation Blackboard, okay? Now Operation Blackboard was, as I told you, was invented so that we give basic requirements to the elementary schools, okay? The word blackboard, जिस स्कूल में blackboard नहीं था उस स्कूल में blackboard मिले इसीलिए. और the other things that they had to give was necessary land for the construction of school building. Then they had to give some repair. They matlab ki the central government. The central government had to give certain repair and maintenance charges for the buildings, the elementary school buildings, and proper fencing was to be done. The toilet facilities should have to be ensured. The blackboard should have to be ensured, and the provision of essential teaching learning material was to be ensured under OBB, that is Operation Blackboard, okay, that we call as OBB. Okay, that is also centrally governed scheme. Okay, now we come on to the last point that we have to learn, that is Sarva Shiksha Abhiyan. Okay, this is also a flagship program under the central government, and this is also for universalization of elementary education, and this started in 2001 and 2002. Okay, this started in 2001 and 2002. Now with DPEP, we tried that we should ensure that maximum enrollment is there and maximum retention is there, minimum dropout is there. With OBB we tried, with MLL we tried, but still, with MADM we tried, but there was still there were certain areas where there was less of enrollment and more students were outside. So we started the program called as Sarva Shiksha Abhiyan, so that it ensures, we started in 2001 too, so that we, yes, you want to say something? Hello? Hello? Okay. So, Sarva Shiksha Abhiyan was started so that we ensure that all the students under the age of 6 to 14 are enrolled in the primary schools by the year 2010. That is 2010. We should be ensuring that all the children under this age group are under the elementary schools. Okay. So now for this, we had certain provisions under the Sarva Shiksha Abhiyan. Okay, under this we had
certain goals. What were the goals of Sarva Shiksha Abhiyan was open new schools in areas which do not have them and expand existing school infrastructure. Okay. Now see, one of the reason why the students were not getting enrolled is because they had elementary schools which are far off from their place. So so one of the goal of Sarva Shiksha Abhiyan was that we have to open new schools in whichever area there is less schools and where the children have to go more than 1 kilometer to get admitted in a elementary school. Okay. And expand the existing school infrastructure. There would be even schools where there are more number of children and the infrastructure, the number of rooms or number of benches etc are very less. So Sarva Shiksha Abhiyan wanted to monitor this and they wanted to expand the school infrastructure and maintain it. Okay. The next thing that they wanted to do was provide additional classrooms. You will find that there is much similarity between the aim of DPEP and aim of Sarva Shiksha Abhiyan. Okay, but there are few things which are extra. DPEP focus much on the infrastructure and the maintenance part of the school buildings etc or giving drinking water toilet facilities etc, but Sarva Shiksha Abhiyan also wanted that we should have adequate number of teachers and provide training to the development of the existing teachers. Okay, this was not there in DPEP does not focus on the teachers training and their upliftment, but Sarva Shiksha Abhiyan also wanted that we should have enough adequate number of teachers and we should have training for the existing teachers. So this is something different than DPEP. Okay, then provide quality elementary education. Provide quality elementary education, including the life skills, with a special focus on education for girls and children with special needs, as well as computer education. Okay, see, computer education was focused even before that. We had it in NPE 1986. We had it in DPEP also. We also had it in OBB. But now Sarva Shiksha Abhiyan is also focusing much on girls education and children with special needs, the children who are having some mental or physical disability. Okay, so these were the main goals of Sarva Shiksha Abhiyan. Now coming on to the main objectives of SSA or the Sarva Shiksha Abhiyan. First is education, all the children in the school, education guarantee center, alternate school and back to school camp. Okay, so these three things were focused. One is education guarantee center. It means that every child will be guaranteed education. Okay, what do you mean by guaranteed education? That every child will be having an access to elementary school nearby to his or her home. The second thing is alternate school. If the child is not able to go to the normal schools during the daytime, the child will have alternate schools or non-formal school where the child can go in the evening and learn. Okay, then back to school camp. In the back to school camp, the teachers used to go to the local areas and they used to motivate the children to get admitted in the primary school. Okay, so this was the aim of SSA. Another aim was all the children who have completed 5 years of primary schooling by 2007. Okay, they wanted that it started in 2001. So they wanted that all the children in the age of 6 to 14 should have completed 5 years of schooling by 2007. Then next is all children should complete 8 years of elementary schooling by 2010. Okay, because SSA was given for 2010. And the next is focus on elementary education of satisfied quality with emphasis on education for life. Okay, if you remember, just now I told you what was the goal of SSA. The goal of SSA was also to give them some life skills and moral education. Okay, which was never the focus in OBB or in DPEP. Okay, but here they wanted that the children should be enrolled, retained, and the dropout should be reduced. But along with that, the children should get quality education.
Okay. Then next is bridge all the gender and social category gaps at primary stage by 2007. Okay, bridge all the gender gaps means there were places where the female children were not sent to school, so that should be bridged. All the female children should also be enrolled in the school, and there were places where these socially backward people were not allowed in the school, or what were not taking admission in the school. So it was the teachers and the principals responsibility to go and motivate them and get enrolled them into the school, so that they complete their 5 years of schooling by 2007 and 8 years of education by 2010. Okay, so universal retention should be there by 2010. Okay, we of course had with the SSA had achieved somewhere around 95% of enrollment and retention, and the dropout was quite reduced. Okay, but there were certain problems like the funding, whether the central government will give the fund or whether the state government will give the fund. So what happened is, as you all might be knowing, that before this see we had this planning commission. Okay, now what is the new name for the planning commission? Okay, let me tell you that, see, the planning commission used to plan 5 years of budget for the different sectors of the society, whether it is an economic sector, financial sector, for education as a sector, okay, for social development, for women development. So under this 5 years plan, we had certain plans. Like for example, in the ninth 5 year plan, we had 85% of money for the SSA to be given by the central government, and only 15% money to be given by the state government. When it was the 10th 5 year plan, 75% was given by the central government and 25% of money was given by the state government. This is for SSA, okay? Because see, when so much of monitoring has to be done, the teachers have to be trained, the principals have to be trained, and when children have to be brought back to school, the infrastructure has to be expanded, then you need to have money. So the money in the beginning was coming from the center, and very less amount was to be paid by the state government, but later it was 75% to be paid by the central government and only 25% by the state government. And in the 10th 5 year plan, 50% was paid by the central government and 50% was paid by the state government. Okay, so these were the some of the things that had happened. Okay, under SSA there were many other things that had happened. Like we had the community mobilization, like there was a village education community, wherein if the school is in the village, then the what we say, the panchayat is there. So whoever is the head of the panchayat, he and the principal, along with the two or three other teachers and the members of the community, they used to monitor the amount that is come from the state government, and they used to decide that for what that money will be used, how to uplift the elementary schools and like that. Okay, so there were many other things that had happened in SSA, but I'm not going into detail of it since we lack time. You can read about it on the web, and much is given on that. Okay, so I stop the class here, and with this we complete all the topics that we have to do. uh, One of the things that I have to tell you is that I have skipped is when I was telling you about DPEP, OBB, I was telling you about Shiksha Karmi program. There was one more program called as MLL. Okay, that was minimum levels of learning. Now, see, when I told you about the universalization of elementary education, I told you
that it has to focus on three things. One is provision of the schools, second is enrollment of the schools, and third is achievement of the students. No, third is the retention. Okay, there is a fourth step also, that is uh, universalization of achievement. Okay, now what is universalization of achievement? Universalization of achievement means that the student should have at least minimum level of learning in language, that is English or any language that they are learning, as per the structure of the school set up by the state, then science and maths. Okay, these three subjects they should have minimum scores in each class of the elementary school. So with this aim, we also had a program called as minimum levels of learning. Okay, wherein the students were the regular tests were taken at the end of fifth standard and eighth standard to find out how much was their scoring in maths, science, and English. Okay, and if the child was lacking behind, then the teachers had to give them remedial classes and had to improve their score. Okay, so this was about minimum levels of learning, which was also a program to ensure UEE, because under UEE or universalization of elementary education, we had to give four steps. One is universalization of provision, universalization of enrollment, universalization of retention, and universalization of achievement. Okay, fine then. So this is what I had to tell you, and I make sure that today I'm sending you the things across. Okay, you have मैम anything आप to ask? कल आप कह रहे थे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अबाउट इलेक्शन. अच्छा, शेयर करूं क्या? मुझे लगा कि आप लोग लीस्ट Yes, इंटरेस्टेड. ma'am. Okay, आप करें. actually I had election duty in this Bajwa Karodia Ring Road. There was one Balwadi, and there I had this election duty. Okay, so I was given the task of giving वो have you all gone for election any time? तो आपने देखा होगा कि वो blue ink से dot करते हैं हमारे finger पे, showing Yes, that. ma'am. Yes, ma'am. Okay, मुझे वो करना था, और वो जो ईवीएम मशीन होता है ना, उसको ऑन करना था. मतलब when the candidate will come to vote, I have to put it on so that they can give their vote. Okay, the room was very small, so I was just near to the ईवीएम मशीन. तो मुझे दिखता तो नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लोज्ड वो पैक था. लेकिन फिर भी मुझे ये जरूर दिखता था कि वो लोग कंफ्यूज्ड हैं या वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था. तो मतलब there was 50% voting in that मतलब वो जो मथक था वहां पे 50% वोटिंग हुआ, लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट 30% वर सच मेल एंड फीमेल वेर सच दैट दे डिडंट इवन नो कि कौन सा बटन दबाना है, या तो फिर वो देख भी नहीं रहे थे कि बगल में क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी का है कोई या कांग्रेस का है, तो उन लोगों के जो चिन्ह होते हैं वो लगाए होते हैं और बाजू में इसका नाम लिखा होता है. तो क्योंकि ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, इसीलिए एक वोटर है वो 4 लोगों को वोट दे सकता था, लेकिन एक ही व्यक्ति को 4 वोट नहीं दे सकता था. तो मैं उनको बोलकर भेजती थी कि તમને 4 વોટ આપવાની છૂટ છે, પણ એકને તમે 4 નહીં આપી શકો, તમને ચારે વોટ अलग अलग વ્યક્તિને આપવી પડશે. तो वहां जाने के बाद दे आर सो कंफ्यूज एंड देयर वर मेनी पीपल हु वर सेइंग મને તો બેન આમાં કઈ ખબર નથી પડતી, તો સાને પ્રેસ કરું. मतलब आई हैड टू लिटरली गो एंड टेल देम कि, और मैं बार बार बोल रही थी कि भूरा बटन ने दबाओ, भूरा मतलब ब्लू बटन को दबाना है आपको वोट देने के लिए. एंड हर एक कैंडिडेट के सामने ब्लू बटन तो था ही एक्टिव, आपको सिर्फ वो प्रेस करना है तो वो मतलब वो वोट डाल जाएगा. लेकिन वो लोग वो भी नहीं सुन रहे थे और बार बार मुझे ये पूछ रहे थे कि आमा कोने करवानो एज इफ दे वर आस्किंग. तो मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि मैं अभी तुम लोगों को यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और पॉलिसी सिखा रही हूँ, तो मेरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा था कि शायद जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो रिकमेंडेशन करने वाले कमिटीज हैं, उन लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस शायद इसलिए दिया क्योंकि अगर बेसिकली भी थोड़ा पढ़े होते तो एटलीस्ट वो लोग कैंडिडेट के नाम तो पढ़ते, एटलीस्ट वो लोग वो चिन्ह देख के तो आइडेंटिफाई करते कि भाई ये सो एंड सो पार्टी का है या ऐसा कुछ. तो majority of them, and especially the females, old females
वो लोगों को आता ही नहीं था, एंड वो लोग मुझे लिटरली पूछ रहे थे कि कौन है आप पानू बेन, कौन है आप पानू। तो आई कैन नॉट से, बिकॉज सामने वो जो पार्टी के जो एजेंट्स होते हैं वो बैठे होते हैं, तो मैं उनको थोड़ी प्रॉम्प्ट कर सकती। तो आई जस्ट यूज टू से कि आप देखो, इसमें सारे चिन्ह देखो, और फिर आपको जो ठीक लगता है उसको करो, बट दे वर नॉट इवन एबल टू रीड। ओके, तो आज मैं जब ये मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात कर रही थी, तभी भी मैं सोच रही थी कि हमारा इंडिया कैसे प्रोग्रेस किया है। अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे गो फॉर द प्राइमरी स्कूल्स एटलीस्ट, तो उनको एटलीस्ट लोगों के नाम पढ़ना तो आएगा। लेकिन वहां पे तो ऐसी हालत थी, गांव था, और वो अभी रिसेंटली कॉरपोरेशन में आया है, मतलब शहर में इंक्लूड हुआ है। तो उसमें द मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे ही थे जिन लोगों को ना चिन्ह पता चल रहे थे, ना उनको कैंडिडेट्स के नाम पढ़ने को समझ में आ रहे थे। बस वो लोग ऐसे ही पूछ रहे थे मुझे, और मतलब आई वॉज रियली फीलिंग नॉट लो, बट आई वॉज रियली फीलिंग कि सी व्हाट इज द प्लाइट ऑफ आवर कंट्री एंड हाउ इज इट। सो थैंक गॉड एटलीस्ट नाउ पीपल आर अवेयर कि बच्चों को स्कूल भी भेजना है, और इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और एलिमेंट्री स्कूल्स भी खुले हैं कि बच्चों को हम लोग भेजते हैं। तो जितने भी लोग वो नहीं कर पा रहे थे, वो लोग थे जो हमारे पीछे के जनरेशन के हैं, मतलब शायद मेरे पेरेंट एज के, या मेरे पेरेंट से भी पुराने, यानी मेरे दादी या दादा के एज के। तो वो ठीक था, एंड द यंग पीपल वर ऑल्सो, एक दो ऐसे थे जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि कौन सा करूं कौन सा करूं, वो लोग भी थोड़े कंफ्यूज थे, शायद इसलिए क्योंकि दे वर कमिंग फॉर वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या एजुकेशन रियली हैज टू बी देयर, कि थोड़ा एटलीस्ट पढ़कर तो समझ में तो आए उनको कि सो एंड सो पर्सन है। अब वो सब जो वोटिंग लोग हैं, वोटर सॉरी, वो जो कैंडिडेट्स है, वो सब उनकी एरिया से ही खड़े हुए होंगे, और बहुत छोटा एरिया है तो वो जानते भी होंगे उनको, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे थे उनका नाम। अब मैं वहां पे एज एन इलेक्शन की जो ड्यूटी करने के बजाय मैं उनको वो पढ़कर तो नहीं सुना सकती हूँ, तो वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे। तो that is something that was provoking me कि कैसा, what is the plight of India, see how it is ऐसा। So that is what I wanted to share. So I want to share to you in this context के बीएड के बाद शायद आप में से बहुत सारे फिर पढ़ाने नहीं जाओगे, या फिर कुछ लोग जो पढ़ाने जाओगे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने जाओगे। तो कभी भी अपना जो अंदर का जो क्या बोलते हैं बूस्ट है वो छोड़ मत देना, मतलब अंदर का जो फायर है वो छोड़ मत देना पढ़ाने के लिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन, और देखो वंस यू डू बीएड उसके बाद आप लोग प्राइमरी स्कूल्स में भी, एलिमेंट्री स्कूल्स में भी सरकारी जॉब वो टेट और टेट पास करके जाओगे ही, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब्स होती है। तो कभी भी ऐसे लेट गो मत कर देना कि छोड़ो, पढ़ते हैं तो पढ़े, ना पढ़ते तो कुछ नहीं, हम अपनी लाइफ एंजॉय करें और हम अपना मतलब वो करें, बिकॉज इट इज समवेयर आवर ड्यूटी ऑल्सो दैट वी मेक देम एजुकेटेड एंड एटलीस्ट मेक देम फिट इनफ कि वो अपना कुछ रीड करके अपना कुछ समझ सके। बाकी सब तो ठीक है, वो लोग हायर एजुकेशन में जाए ना जाए, बड़ी डिग्रियां ले ना ले, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट मिनिमम तो उनको आना चाहिए। देन ओनली आई थिंक इंडिया कैन प्रोग्रेस, एंड इट ऑल लाइज इन आवर हैंड्स। सो दिस इज ऑल दैट आई मैम वांटेड। न्यूटन करके मूवी था, न्यूटन करके, उसमें भी हाँ सेम था। हाँ आर राजकुमार ने किया था। हाँ वहां पर भी सेम हालत थी, आधे लोग को तो पता ही नहीं था कि इलेक्शन होता क्या है, वोटर आईडी के होता क्या है, हाँ बटन क्या हाँ होता है, उनको कुछ पता ही नहीं था। सेम सिचुएशन वही पे थी। हाँ 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 मैम, और बड़ोड़ा में इस बार तो बहुत कम हुआ है वोटिंग। हाँ, बहुत कम हुआ है वोटिंग, बिकॉज पता नहीं मैम क्यों, पर ये शायद। अवेयरनेस हाँ वोटिंग के रिगार्डिंग की, मैम ये जो अवेयरनेस है वो एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज वो दे सकते हैं। यही होता है काफी बार, मैंने भी जब वोटिंग किया था कल तो ऐसा ही था, मेरे भी जो आगे थे उनको एग्जैक्ट मालूम ही नहीं था कि कैसे करना है। तो एटलीस्ट किसी तरीके से लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाना चाहिए कि आपको वोट कैसे करना है। अदरवाइज फिर वो वोट भी दे बट दे आर नॉट श्योर, तो फिर इट इज काइंड ऑफ वेस्ट ओनली। बात ये है कि जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो लोग शायद किसी को मिलने ही नहीं जाते, वो लोग सिर्फ पार्टी का झंडा हाँ। लेके घूमते हैं, एंड बस दैट्स इट। यस। So what they are going to do, what is their agenda, at least
मैं जब व्हेन आई वाज इन स्कूल, हम लोग देखते थे, एटलीस्ट दे यूज्ड टू कम हमारे घर घर आते थे, दे यूज्ड टू टेल अस दैट दिस इज व्हाट वी आर एमिंग एट, बट नाउ हार्डली एनीवन वांट्स टू कम, कोई आता ही नहीं है, बस ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये इसका है, ये उसका है, एंड दैट्स इट। मतलब इट इज अ पार्टी हु इज लाइक शोइंग। अब कॉरपोरेशन का है तो कॉरपोरेटर्स जो होंगे वो लोग तो उस एरिया के लिए काम करेंगे ना, तो दे शुड एटलीस्ट कम एंड टॉक टू द पीपल देयर सो दैट दे नो कि भाई हाँ सो एंड सो भाई या सो एंड सो बहन इज इलेक्टिंग हमारे एरिया से। ऐसा कुछ भी नहीं था। यस हाँ मैम, मैम, अभी वो बहुत हाँ मैम। मैम चुका है, पर्सनल पहले टच होता नहीं है, था। सिर्फ नेम फेम ही है। नेम और हाँ फेम है, प्रचार करो, रैली करो, बस बात खत्म। हाँ जो पर्सनल टच वही। है वो चला गया है। हाँ एंड पर्सनल देन टच जो होता है विधानसभा या लोकसभा वाले इलेक्शंस में होता है, कारपोरेशन में तो ऐसे ही करते हैं, कोई नहीं जाता है, बस पार्टी के नाम पे लड़ते हैं। और मैम जो अनएजुकेटेड है ना, वो यही सोचते हैं कि वो लोग आते ही नहीं है, हमारे लिए कुछ करते नहीं, तो वो लोग वोट देने भी नहीं जाते हैं। ऐसा ही यस नहीं के है। आधे करेक्ट। से ज्यादा देने जाते हैं मैम। हम्म। हम्म। ऐसा था, तब जुमला थोड़ा दुख भी हो रहा था, अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि और किससे शेयर करूं, वुड बी टीचर से शेयर करती, हाँ मैम। है ना। यस मैम। यस हम लोग मैम, बहुत सारा हमने भी चेंजेस नहीं इसी ला बहाने। तब जुमला है मैम यस मैम। एजुकेशन के नाम यस पे। मैम। है। क्या बोल रहे हो दीपक? मैं नहीं, हर्षित बोल रहा है कि जुमला है सब एजुकेशन के नाम पे। मतलब ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हम करें वो दिल से करें, यही मैं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, चलो सो। यस मैम। मैम आधे लोगों को तो यस। ये भी मालूम नहीं था कि 4 वोट डालने हैं। हाँ एक वो ही भी नहीं डाल रहे हाँ। थे, तो मालूम नहीं था ना उनको। हाँ वो मैम भी है। कई लोग तो एक ही वोट डाल के ना रजिस्टर कर रहे थे। अच्छा। मैम ये सब ना एक्चुअली एक्चुअली यही इस वजह से ही हो रहा है कि बेसिक एजुकेशन नहीं मिली है। अगर बेसिक एजुकेशन सबको मिलेंगे तो सब अवेयर होंगे कि हम ये क्यों करें, व्हाई इज द हाँ नीड, यस और वो तभी सशक्त होंगे कि हमको कौन से पॉलिटिकल लीडर्स चुनने हैं। दे विल बी अवेयर। उनको पता ही नहीं है कि जब क्या करेंगे क्या होगा, कंट्री कैसे चल रही है, तो हाउ दे विल इलेक्ट। और हम जब कोई भी रूल्स भी ले डाउन करेंगे, जब तो उसको समझने के लिए भी तो बेसिक एजुकेशन तो चाहिए ना। तो अभी ये जो बस मैं यही पॉइंट रेवोल्यूशन बोलना बोल सकते चाहती हैं हूँ कि बेसिक तो मैम, उनको चाहिए ना। करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली मैम। तो जो रेवोल्यूशन लाना है इन द कंट्री, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू एजुकेशन, नथिंग एल्स। और तो दूसरा ही क्या हम है लोग कि change करेंगे। टीचर्स के ऊपर बहुत सारा वो रखा जाता है कि टीचर्स विल जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स होते हैं उनको तो, जैसे गांव वगैरह में है, बच्चा अगर नहीं आता है ना 5 दिन से ज्यादा, तो उसको जाके टीचर का ड्यूटी होता है कि वो घर जाके पूछे कि क्या हुआ और क्यों नहीं आ रहे, और फिर मोटिवेट करे उसको वापस आने के लिए, क्योंकि हमें यस तो यूनिवर्सलाइजेशन करना है। लेकिन तुम्हें पता है टीचर्स क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट का पूरा पे स्केल चाहिए, सब चाहिए, पेंशन चाहिए, सब चाहिए, लेकिन टीचर्स क्या सोचते हैं पता है? ये क्या जफा है, वो लोग को नहीं आना है तो हमको मैम जाके इट इज बुलाने का। वेरी सैड रियलिटी। मैं ऐसा बिलीव यस करती हूँ, आई डोंट मैम। नो अबाउट अदर्स, बट आई या पर्सनली बिलीव दैट ये ऐसा प्रोफेशन है दैट यू कैन मेक और ब्रेक अ स्टूडेंट लाइफ। बहुत या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट शुड बी टेकन एज अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं या कि आप जा रहे हो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मनी, आपने अर्न कर लिया एंड यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। दिस या शुड नॉट मोटो ऑफ आवर लाइफ। हम जा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरे एक चाइल्ड को कैसे उसका पूरा डेवलपमेंट करवा सकते हैं, उसकी कैसे लाइफ चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज वे थ्रू विच हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर तुम बने। अभी भी अपना भी लाइफ देखोगे ना, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास तो नहीं है ना 11:45 को? हम्म, नहीं मैम, मैं अभी ऐसा कुछ मैसेज भी नहीं मैं आया। नहीं मैसेज मैम, नहीं अभी है ग्रुप कोई में। मैसेज नहीं लेकिन है। अगर तुम लोग अभी अपना खुद का लाइफ देखो, अभी तुम लोग ने ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और अभी तुम बीएड करने आए, तो तुम्हारा जो होल पर्सनालिटी अभी है, इट इज ऑल्सो हैविंग सम इम्प्रेशन फ्रॉम योर स्कूल डेज। कुछ कुछ यस चीजें तो ऐसी होगी जो तुम लोगों ने स्कूल में सीखी है, इसीलिए तुमको आता है, इसीलिए यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और कलीग्स।
तो वैसा तो होता ही है। तो वो जो स्कूलिंग होता है, हम जब देते हैं एज टीचर्स और जब बच्चे रिसीव करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं चलता। बट जब वो लोग ग्रूम हो जाते हैं, नर्चर हो जाते हैं और बड़े होते हैं, तब उनकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो उन्होंने बचपन में सीखा है। एंड बचपन इज ऑल अबाउट प्राइमरी स्कूल एंड जो भी वो लोग घर पे सीखते हैं वो। यस मैम। इसीलिए इट इज अ Yes, ह्यूज ma'am. हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम, सो मैनी वी टाइम्स ऑल होता शुड है कि अंडरस्टैंड दिस। जो पेरेंट्स होते हैं दे आर नॉट वेरी लिटरेट, तो वो नहीं वो एनवायरनमेंट दे पाते हैं, तो हाँ। बच्चे में पोटेंशियल होने के बावजूद वो नहीं अचीव कर पाता उसके टारगेट्स या जो भी उसका पोटेंशियल है। तो एज अ टीचर यहाँ पे टीचर का रोल आता है दैट बच्चे को कैसे हेल्प करा जाए इस सिचुएशन में, सो दे कैन डू वंडर्स इन द लाइफ। Yeah, and that is why I feel somewhere हम जो पहले बोलते थे ना गुरु शिष्य परंपरा, और अभी हम लोग टीचर बोलते हैं, वी डोंट कॉल टीचर्स गुरु एनी मोर, बिकॉज पहले के जो गुरुज थे दे वांटेड एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ओवरऑल मतलब उनका मेंटल एंड उनके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स थे, उनके जो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स थे, वो सब में वो लोग चेंजेस लाना चाहते थे। लेकिन अभी का टीचर सिर्फ चाहता है कि सिलेबस कंप्लीट करे, असेसमेंट करे, ग्रेड्स दे दे उनको, और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करा दे और खत्म करें। एग्जैक्टली मैम, दे आर टेकिंग मोर एज अ बर्डन Yes, ma'am. रादर देन और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशन, अब प्रोफेशन को भी अब किस तरीके से लेना है वो हमारे ऊपर है। तो यस थिंक अबाउट ऑल दीज प्राइवेट थिंग्स। स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल में खुद से मार्क्स प्राइवेट हाँ स्कूल में खुद से मार्क्स देंगे, खुद पास हाँ। करेंगे, खुद प्रमोट करेंगे, खुद पब्लिश करेंगे, बात खत्म। एवरीथिंग पॉलिटिकली हो गया है, सब पॉलिटिकल हो गया है। लगता है कि कहीं ना कहीं हम सही लोग कह एज रही मरियम। हैं कि हमें क्या मिल रहा है, और हम क्यों इतना करें जब किसी को कुछ पड़ी नहीं है, दूसरे तो कर नहीं रहे हैं। तो हर बंदा जब ऐसा सोचने लगता है तो पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं वो जो फाउंडेशन है वो पूरा का पूरा मतलब अप्रूट हो जाता है। पूरा फाउंडेशन ही बिगड़ जाता है, और बिगड़ गया ही है, इसीलिए बिगड़ गया है। और इसीलिए शायद अब हम टीचर्स हैं, वी आर नो मोर एजुकेशन गुरु। मैम सबसे बड़ा बिजनेस अगर वर्ल्ड में चल रहा हो ना तो एजुकेशन के नाम पे चल रहा है। या इससे बड़ा बिजनेस कहीं चल ही नहीं सकता, और सबने ऐसा बिजनेस ही ले लिया है। मतलब ये फैक्ट रियलिटी है। हाँ इंडिविजुअल हम चेंज प्राइवेट करेंगे, स्पेशली। चेंज करना चाहते हैं, चेंज करेंगे, हाँ। बट ये फैक्ट रियलिटी को तो हटाना पड़ेगा पहले। लेकिन पूरा का पूरा हटा नहीं सकते। इट इज लाइक आप अपने क्या बोलते हैं, जिस जिस जगह पे भी आप पढ़ाओगे वहां पे आप फुल ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट से पढ़ाओ, जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी अ कमिटेड टीचर। अदरवाइज ऐसा हम लोग ये पूरा सिस्टम को उखाड़ के फेंक सकते, वैसा नहीं हो सकता है। तुम लोगों से मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग एक बड़ा लॉट हो, यू आर अ बिग बिग इन नंबर। तो आप बहुत अलग अलग जगहों पे जाओगे, तो इफ यू थिंक इन दिस पर्सपेक्टिव तो शायद कुछ चेंजेस आएंगे। और हर एक के करने से होगा। हर एक अगर दूसरे को ब्लेम करेगा कि सिस्टम ऐसा है और दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम क्यों करें, हमें क्या पड़ी है, तो फिर ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, और ये बिजनेस बना है और भी बनता रहेगा। यस मैम, और शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है ना। और खुद से ही करनी पड़ती है और खुद ही को करना पड़ता है, और तो कोई करे ना करे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मतलब यस यस। फर्क पड़ने से भी क्या है, क्योंकि हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सपोज मैं कोई स्कूल में टीचर हूँ और मेरे साथ दूसरे 4 टीचर्स हैं, मैं कमिटेड होकर पढ़ाती हूँ, बच्चों को रेमेडियल प्रैक्टिस देती हूँ, और दूसरा टीचर बस पढ़ा के निकल जाता है, सिलेबस पूरा करता है और मैं चाहूँ कि वो भी मेरी तरह करे, वैसा कभी नहीं हो सकता। So you have to do things because you want to do, not because to show anyone or anything. And अभी तक का जो भी लाइफ है मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, गुडनेस ऑलवेज पेज यू बैक in one or the Yes. other way. So think about यस all मैम। these things when you grow up as a teacher. Okay, so let's stop the class और today. मैम लास्ट में Bye. एक और चीज बताएं हम कि हाँ हाँ व्हेन यू फील अलोन तो सिर्फ एक ही थॉट आना चाहिए। मैम बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ आता है, व्यू पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि जब प्रिंसिपल बोल रहे हो, टीचर्स का प्रेशर हो, स्टूडेंट बोल रहे बोलो। हो, पेरेंट्स का ऐसा हो रहा है,
तब एक ही चीज सोचनी होती है, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ मैं ब्रह्मास्मि हूँ, आई कैन कंट्रोल द सिचुएशन। सही है। हाँ, ये अच्छा है, मोटिवेट कर खुद को ही मोटिवेट कर देने का क्या हम ब्रह्मास्मि। और वैसे भी कोई दूसरा हमको मोटिवेट कर भी नहीं सकता। यस, ये सब इंटरनल मोटिवेशन ही होता है मैम। सारा इंटरनल ही होता है, और स्पेशली टीचिंग प्रोफेशन में वही होता है। ठीक है, तो कभी हम बात करेंगे इस बारे में, शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई टॉपिक में मिलेंगे तब। चलो फिर, बाय ऑल ऑफ यू। ओके मैम, बाय मैम, मैम, बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू।